स्क्रीन नजर आ रही है? हम्म अच्छा जी, अगेन हम एडवर्टाइजमेंट्स पे जाते हैं. टर्निंग टू देख एडवर्टाइजमेंट्स. लो। हम्म As you're well aware, alongside an intention to create legal relations, often acceptance and consideration are needed to form a binding contract. The first two of these requirements, an intention to create legal relations and an offer and acceptance, can be very closely linked in the case of adverts. ठीक है, एडवर्ट्स के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है आपके पास एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हो, उससे पहले हम्म आपके पास एक ऑफर भी होनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए acceptance। आपकी तरफ से. एंड वो हमने प्रीवियस सेशंस में पूरा किया था कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे होता है. अब हम एसओ पेट्रोलियम को एंड कमीशंस ऑफ कस्टम एंड एक्साइज पर जाते हैं. Specifically produced World Cup coins were distributed by ESSO to their dealers, who offered their customers a free coin with the purchase of 4 gallons of petrol. The House of Lords were divided in their opinion as to whether the offer of the free coins could amount to a sale, and if so, whether there was any contract with regards to the coins. One argument put forward was that the coins could only be for sale if there was an intention to create legal relations in respect of the transfer of the coins between garage proprietors and motorists. The majority felt that there was such an intention, relying on the business context and the large commercial advantage ESSO expected to derive from the promotion by attracting extra customers. This is not a completely satisfactory analysis, as although it could justify attributing an intention to create legal relations to ESSO, it could not be applied equally to the other contracting parties. Conversely, the minority found no intention to create legal relations, relying on the language used in the offer, the trivial value of the coins, and the unlikelihood that any motorist denied a coin would believe that a legal remedy was available to rectify the default. इसमें दो, एक पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 5 है. The majority felt that there was an intention, relying on the business context and the large commercial advantage ESSO expected to derive from the promotion by attracting extra customers. एक उन्होंने जो बिजनेस बेनिफिट है, मेजॉरिटी ओपिनियन ने बिजनेस बेनिफिट को देखा कि अगर आप हम्म एक तरफ पे कहते कि जी जो है हम उस पे एक्शन पे नहीं आते या हम रिप्रिकॉशन पे नहीं या कॉन्सिक्वेंस पे नहीं आते, तो बेनिफिट क्यों मिल रहा है फिर? ठीक है, एसो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वेंचर. ठीक है, हम्म एक लार्ज इनफ्लक्स ऑफ कस्टमर्स आए उनके पास. ठीक है, अब when that benefit is there, ठीक है, सो वो कहते हैं कि यार एक एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन तो आपने ऑलरेडी फिर बना लिया था. हम्म लेकिन the minority found no intention to create legal relations, relying on the language used in the offer, the trivial value of the coins, and the unlikelihood that any motorist denied a coin would believe that a legal remedy was available to rectify the default. ठीक है, उन्होंने कहा यार, लेकिन देखो कॉन्ट्रैक्ट का मेन वो क्या है कि it does not matter कि what the value of consideration is. वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे कभी भी उन्होंने कहा कि इट शुड हैव अ वैल्यू, इट शुड हैव अ फाइनेंशियल हम्म वैल्यू, नो हम्म हाउ ट्रिवियल इट इज, इट शुड हैव अ वैल्यू. ठीक है, तो माइनॉरिटी ओपिनियन इसलिए अपहोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि यार आप लैंग्वेज पे ऐसे तो नो, फाइन प्रिंट कोई भी डाल दे और वो कहे कि जी ये लैंग्वेज चूंकि इस तरह है, तो दैट इज व्हाई, आई मीन,
it's just a tactic of getting out of that contract. Hmm. Hmm. Yeah? So that is why the minority opinion was not accepted. Some statutory provisions may stipulate that no intention to create legal relations can be inferred unless there is an express provision to the contrary. सही है. ठीक है, जब तक आपकी एक एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है टू क्रिएट एन इंटेंशन फॉर क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन, Hmm. तक आपने किसी बंदे को एक्सप्रेसली बोला नहीं है, उसको कम्युनिकेट नहीं किया, आप ऐसे ही जाके ऑन अ whim आप ये नहीं कर सकते कि जी हाँ ये हमने एक इंटेंशन क्रिएट कर ली, Hmm. इवन वेयर देयर इज ऑलरेडी एन इंटेंशन। जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप एक सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी ऑब्वियसली यू नीड टू मेक एन एक्सप्रेस, एक चीज एक्सप्रेस करने की जरूरत है कि यार हम ये चीज कर रहे हैं या हम ये चीज में आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो Hmm. नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कैन बी इन्फर्ड, इन्फर हो सकता अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी। सही. ठीक है, अब मैं आपको कह दूं कि जी आई मीन जस्ट बिकॉज यू थॉट के लीगल रिलेशंस क्रिएट हो गए, ठीक है, does not mean I thought the same. Otherwise, there is no express provision. ठीक है, कोई ये नहीं कि अगर आप कहते कि यार एक्सप्रेस प्रोविजन है तो हम कहते कि हाँ इंटेंशन टू Hmm. क्रिएट रिलेशंस they've come into existence. Hmm. For instance, by virtue of Section 179 of the Trade Union and Labor Relations Consolidation Act 1992, collective agreements between trade union and employees are presumed to lack the required intention to be legally binding unless the agreement is in writing and Hmm. contains a provision to the effect that the parties do intend the agreement to be legally enforceable सही. contracts। ठीक है, ये जिस तरह आई मीन वॉलंटरी जो वो हो गया, एक यूनियन होगा या वॉलंटरी कोई पार्टी है या वॉलंटरी कोई ऐसे जो जिससे आप कोई चीज डिराइव नहीं कर रहे, Hmm. जहां पे कोई एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, वहां Hmm. से आप ये नहीं कह सकते कि यार एन इंटेंट देयर इज एन इंटेंशन टू लीगली बाइंड वन अनदर। Where these conditions are satisfied, the agreement will be presumed to have the necessary legal enforceability। Subject to contract, अभी ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे तो उसमें कन्वेंसिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है सब्जेक्ट टू Hmm. कॉन्ट्रैक्ट। The expression subject to contract creates a strong inference that the parties do not intend to be bound until the formal execution of a contract. Ab सही बात. execution of a contract, obviously, it's one of my videos. In when I'm explaining conveyancing, execution तब तक नहीं है जब तक number one, you have not given authority to your solicitors to Hmm. exchange on their behalf। ठीक है, Hmm. number two, you have not read out your part of the agreement, the one that you hold, and the other side solicitor's part of the agreement, the one that they hold। क्योंकि it should be basically similar, it should be the ditto copy of the other agreement। इसलिए हम हमेशा ऑन द फोन हम उसको रिसाइट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट कि दीज आर द एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज। उसके बाद यू नीड टू, अब दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, ऑब्वियसली कमर्शियल एग्रीमेंट्स डिफरेंट होते हैं। Hmm. सेल एंड परचेज में आपने ऑब्वियसली देयर इज अ 10% कंसिडरेशन और अ डिपॉजिट, 10% ऑफ द परचेज प्राइस और द सेल प्राइस needs to be held on a strict order of the buyer solicitors by us। यानी कि वो आपको अगर कहते हैं कि आप हमें ये पैसे इस वक्त ट्रांसफर करें, दिस इज ए गुड कंसिडरेशन, यू नीड टू ट्रांसफर दिस टू अस
for this deal to be valid, तो आपको उनको ट्रांसफर करने होंगे. यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि वी हेल्ड इट टू देयर ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि वो अगर आपको ऑर्डर करते तो आप यूर बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट कि आप उनको वो पैसे जो 10% ऑफ द सेल प्राइस है वो आप उनको भेजेंगे. कंसिडरेशन की बात करें ना आप, सो इट्स हम्म बेसिकली वैल्यू कंसिडरेशन, वो आपने करना हो. नाउ until that is done, there is no there is a strong inference that the parties do not intend to be bound. हम्म हम 12 वीक्स लगाते एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में, हम्म ठीक है, फ्रॉम ऑफर टू एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टू कंप्लीशन. 11th वीक 23rd आवर में हम्म अगर एक पार्टी या दूसरी पार्टी कहे कि आई वांट टू बैक आउट, दे कैन. देयर इज नो इशू, देयर इज नो हम्म लीगल बाइंडिंग. unless there is a formal execution. हाँ, अनलेस देयर इज अ फॉर्मल एग्जीक्यूशन या अनलेस उन्होंने कोई पैसे रखे हो एज हम्म रिजर्वेशन फी. हम्म यार अगर मैं बैकआउट होता हूँ या मैं इस टाइम पे नहीं कंप्लीट करता तो ये पैसे आपको चले जाएंगे, या अगर आप नहीं कंप्लीट करते तो ये पैसे मुझे चले जाएंगे. हम्म ठीक है. An agreement subject to contract prima facie is not binding. हम्म इट्स नॉट बाइंडिंग. मैंने आपको कहा कि 11th आवर में भी अगर आप कहें ना कि जी मैंने आई वांट टू गिव I don't want to proceed with this contract. Yeah, I don't want to proceed with this sale or a purchase. There is no, uh, I mean, no one can hold you towards that agreement. ठीक है? In a sale of a land, it is usual to express tentative preliminary agreement to be subject to contract so as to give the parties an opportunity to reflect, seek legal or other advice before entering into a binding contract. मैंने वही आपको बताया कि उनके पास 11th आवर तक वो होता है, जब तक हम उनसे अथॉरिटी ले लेते हैं एट द वेरी एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन. हम उनसे पूरे स्टेप्स करने के से पहले अथॉरिटी नहीं ले सकते. पूरे स्टेप्स करने के बाद हम उनसे अथॉरिटी, एंड इट इज आवर ड्यूटी to हम्म make them understand of the consequences and repercussions after what happens after the exchange of contracts and this and that. ठीक है, कि उनकी yes. प्रॉपर्टी नहीं रहती, ये है वो है, या वो लीगली बाउंड है इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन देयर लैप के अगर कुछ. तो एवरी सिंगल थिंग we have to make them aware before they give us authority. The expression subject to contract has received judicial recognition for this purpose. ठीक है. आप जज साहब के पास ये नहीं जा सकते, कह सकते कि जी वो सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था तो इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी नहीं परचेज की. नो. was there a valid exchange of contracts? Exchange of contract मतलब यानी कि did the solicitors have the solicitors recited the contract to one another after taking your express हम्म authority? अगर अथॉरिटी नहीं है तो फिर सेल भी नहीं है, and the damages would fall on the solicitor, the issues okay. would fall on the solicitor. कि उन्होंने अथॉरिटी के बगैर एक्सचेंज कैसे किया. यू कांट, because it's not your property to begin with. हम्म Social and domestic agreements. In cases of social, family, or other domestic agreements, the usual presumption is that there is no intention to create legal relations. मैंने कहा दोस्त हैं हम, अब you हम्म would never infer, you can never imply कि जी हम दोनों में एक agreement है to do anything until and unless it's I formal. I mean, मैं एक चीज या आप एक चीज जो है वो कहते हो कि यार हम मैं ये चीज सेल कर रही हूँ या मैं ये सर्विस दूंगी या दिस एंड हम्म दैट. ठीक है. It is yes. common sense that these types of agreements in relation to family agreements as to the allocation of domestic chores or social arrangements to meet friends for a drink or a meal do not amount to legally enforceable agreements. जैसे मैंने आपको कहा कि आपके हस्बैंड है या मेरी वाइफ है वो मुझे कल को कहती है या आपको कल को कहते हैं कि जी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, नहीं जाते तो you cannot take them to court कि जी नहीं ये तो मुझे इस, because there is no legally binding contract. Yes.
आपका कॉन्ट्रैक्ट का मकसद, आपका मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये नहीं है कि वो आपको डिनर पे नहीं लेके जाएगा तो आप उसको, यू विल आई मीन टेक हिम टू जेल, इट इज समथिंग एल्स। ठीक है, so you cannot do this. Such a conclusion is derived from the fact that none of the parties would reasonably envisage the right to sue the other for failure to honor the commitment. ठीक है, आप नहीं कर सकते ना, वो एक वो होता है, वरना it makes every relationship very difficult, and the court doesn't want that difficulty on their shoulders. ठीक है, an example of the case law includes agreement between spouses. If the parties reach the agreement before any breakdown in the relationship occurs, the courts have shown a unwillingness to find intention to create legal relations. Balfour versus Balfour 1999, कि जब तक आपका अपना रिलेशनशिप है, आप अनजान लोग नहीं हैं, ठीक है, आप हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, उस हद तक आपकी कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं हो सकते। ठीक है, until and unless there is a written document such as हम्म trust deed, या such as एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि मैरिटल एग्रीमेंट है, या जो कि कोई ऐसी बात है जो कि obviously it is written and it is as per the laws of the land। if deed हम्म ठीक है, अब ऐसे भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में या इंडिया में या एशिया में आप ऐसे कोई एग्रीमेंट कर लें जो कि लॉ रिकग्नाइज ही नहीं करता। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, अदरवाइज दे विल नॉट बी इन्फोर्सेबल। हम्म ठीक है, अब however, again, the presumption can be rebutted and certain social and domestic agreements may be legally enforceable. The question of whether the presumption is rebutted will be resolved by examining the circumstances of each case and the language uh, used by the parties. One such one situation where the courts have shown a willingness to rebut the usual presumption is in relation to agreements made between spouses who were in a process of separating or are separated when the agreement was reached. जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब तक एक डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं, या जब तक वो रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब हम्म तक obviously the court will not recognize that intention to create legal relation. हम्म Married versus married was such a case. ठीक है, similar problems of intention can arise between other family members. Jones versus Padverton, ठीक है, this case shows the difficulty of determining some such cases. The claimant and defendant were mother and daughter, respectively. There was an agreement between the parties to the effect that if the daughter gave up her very satisfactory pensionable job in the USA and came to London to read for the bar with the intention to practice law in Trinidad, where the mother lived, the mother would pay an allowance of $200 a month to maintain the daughter and her small son while in England. After the daughter began her studies in London, the agreement was varied. The mother bought a house in London and the daughter was to live there rent free and use the rent from letting out the other rooms to cover her maintenance. 6 years after commencing her studies, the daughter had yet to pass her bar exam, and the mother and daughter fell out. The mother brought an action to gain possession of the house, and the daughter sought to rely on their agreement as a defense. The Court of Appeal held that the arrangement between the mother and daughter lacked contractual intent, and the mother was entitled to possession. हम्म इस तरह अब मैरिटल गिफ्ट्स में भी कभी कभी ये होता कि जी, जो फादर इन लॉ है, ही हैज गिफ्टेड ए प्रॉपर्टी टू द सन सन इन लॉ, ठीक है, बट देर इज नो ट्रांसफर ऑफ दैट। वो अब गिफ्ट की जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर कि जी प्रोनाउंस होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड पोजेशन होनी चाहिए। हम्म पोजेशन वाली एलिमेंट है वो, अब उसके 2 पहलू हैं। एक पोजेशन है फिजिकल पोजेशन, कि आप वहां पे रहना शुरू हो गए, हम्म
दूसरी पोजेशन है कि वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई है. Hmm. So until there is an agreement that you have a gifted Hmm. deed, an executed and a registered gift deed, Hmm. saying कि यार आप जो है ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है या इस तरह है उस तरह, तब तक you're just a living guest or you're just family living free. Hmm. कोई भी बात हो सकती. Anyone can go behind that intention and say कि जी मैंने तो ऐसे कोई agree ही नहीं किया था. It Hmm. would be harder for the person to prove, the gift recipient to prove कि जी ये gift डिपोज हुआ भी है कि नहीं. ठीक है. सो ये दिस इज सच अ केस कि जहां पे एग्रीमेंट, जहां पे कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, वहां पे द मदर कैन डू एनीथिंग because it is her property. She's on the title deeds. Yes. Capacity. If a person A does not have the capacity to enter into a contract, then a contract with person A is unlikely to bind them. जो Hmm. आपके ऐसे लोग हैं जो they're protected by law, such as a person who does not have the mental capacity. ठीक है. A Or person children. Hmm. a person who's basically not of legal age. Hmm. स्टैट्यूटरी लीगल एज होना जरूरी है. ऐसे नहीं Hmm. कि जो आप एक मेच्योरिटी को समझते. ठीक है. स्टैट्यूटरी लीगल एज होना जरूरी है. लेकिन कभी कभी कोर्ट्स दे लुक एट द मेच्योरिटी एज वेल इन सम केसेस. ठीक है. अब you cannot deprive a person only because they're some months away from being 18. कोर्ट फिर इसमें इंट्रिंसिक इंट्रूजन करती है, देखती है कि यार इज इट रीजनेबल एंड इज इट रीजनेबली जस्टिफाइबल कि ये बंदा दे कुड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. ठीक है. There are rules on capacity of to contract for those who are weak and less capable of looking after themselves, such as children, those who are mentally ill, and others temporarily lacking mental capacity. Hmm. The rules are there to protect the vulnerable and also to protect others who make contracts with those of limited capacity. Hmm. ठीक है. अब लिमिटेड कैपेसिटी के जो वो हैं गार्डियंस हैं, वो आ नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते. इट इज टू प्रोटेक्ट द अदर पार्टी एज वेल. दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करना मकसद है. एक Hmm. जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विद अ पर्सन लैकिंग कैपेसिटी, एंड दूसरा जो पर्सन कैपेसिटी लैक करता है उसके बिहाफ पर कोई ऐसी बात ना करे. ठीक है. कि जी मैं वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड. सो Hmm. इट इज अगेन strict rule, but in some cases वो allow हो भी सकता है. ठीक है. It's circumstantial as well. Pensions over the age persons of the over the age of 18 have full contractual capacity if they are of sound mind and not suffering from a factor ruling out capacity such as drunkenness. If you're drunk, you do not have capacity. You could Hmm. not have entered into a contract if you lack the necessary intention to create legal relations. ठीक है. Minors. Generally, a person is not bound by a contract entered into under the age of 18, even if the person contracting does not know of this fact and the minor has lied about their age. There are two main exceptions relating to necessaries and to contracts of employment, apprenticeship or uh, education. ठीक है. Necessaries. A minor is bound by a contract to supply necessaries to them if the contract is for their benefit. A minor must pay a reasonable price for these rather than the actual cost of the necessaries supplied. Contracts for necessaries include such things as the supply of foods, medicine, accommodation, and clothing, but are not limited to such essentials. Necessaries also include items purchased to the minor's real use, Hmm. provided that those products and services for comfort and pleasure only. What will be deemed a necessary need? What will be deemed a necessary?
a necessity needs to be construed with regards to the minor's age and their actual requirements. ठीक है, आप necessities provide कर रहे एंड एक agreement हुआ है कि आप एक बच्चे को ये चीज़ provide करेंगे, ठीक है। अब उसके obviously वो चीज़ देखी जाएगी कि इसकी necessity में ये fall in करता भी है कि नहीं, ठीक है। अब इसका एक ऐसा सच केस है, नाश वर्सेस इनमैन, ठीक है। Waistcoat supplied to a minor who was an undergraduate at Cambridge University at the time were suitable according to the minor's station in life, but not necessary as he already had sufficient clothing. Accordingly, the contract was not forcible. एक चीज required ही नहीं है. It is not a necessity. ठीक है? Necessity also construes as volume. अगर कुड volume, हैव बीन कि अगर वो पहन के नहीं आता तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे उसको मिलती नहीं. कुड हाँ, हैव बीन नेसेसरी देन. हाँ. Contracts of employment, apprenticeship, or education. A minor is also bound by a contract of employment, apprenticeship, or education, or an analogous contract, but only if it is for their benefit. Hmm. Aylesbury Football Club versus Watford Association Football Club. A young footballer's contract with the club was not beneficial and could not be enforced because the player received no extra training or experience. The terms were onerous for him. They restrict his freedom to pursue a football career and the Hmm. payment of wages dependent on the will of his employer. ठीक है? If it is to the detriment of the minor, You can't the do this. contract is not enforceable. Hmm. No matter if it is written, no matter if it is that, वो लॉर्ड डेनिंग या कौन से लॉर्ड थे जिन्होंने कहा था कि it should be in bold, but that was again for people with capacity. जिसके पास capacity ही नहीं है, even if you type it in bold, they do not Hmm. understand it. They do not understand the repercussion according to the law. वो Hmm. नहीं समझते, Hmm. ठीक है, उनके पास वो capacity नहीं है to understand consequence, the legal consequence of, uh, I mean, deterring with a contract. Hmm. The effect of entering into a contract with a minor, ठीक है, unless one of the exception applies, the contract cannot be enforced against the minor, although the minor can enforce it against the other party. By way of exception, there are a small number of contracts of exceptional types which are enforceable against the minor unless the minor specifically repudiates them. If a minor ratifies a contract once they reach the age of 18, then the contract will be binding on them. सही है. अब इसका एक वो yes and no वो है, Hmm. एक पैटर्न है जिसको अगर आप Hmm. फॉलो करें तो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे एट द एंड कि क्या is is the child bound by the contract or an agreement or not. Children, minor, does the contract concern necessities? If yes, पहले हम yes कर लेते हैं. If yes, Hmm. the minor must pay a reasonable price. Must pay a reasonable. It's an obligation. It's not a Hmm. choice. It's an obligation. ठीक है. उसके बाद हम नो पे चले जाते. अगर नो है, does the contract no, right? It is, if no, it is a contract of employment, apprenticeship, or education. If Hmm. yes, is the contract for the minor's benefit? Yes, Hmm. then the contract is Contract is binding. binding. ठीक है. If Hmm. no, ठीक है, ये is the contract for employment. If no, the child is not bound. Is the contract for the minor's benefit? No, then the Hmm. child is not bound. The only situations where he is bound is Hmm. if it is for his benefit, ठीक है, or if it is a necessities contract. सही हो गया? Yeah. ठीक. Mental capacity and intoxication. A person lacks capacity under Section 2 of the Mental Capacities Act if he is unable to make a decision for himself in relation to the matter at the time the contract is made, whether the impairment is permanent or
टेम्पररी, इसके लिए वो लास्टिंग पावर ऑफ अटर्नीज होती हैं या एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है जो कि एंटर होती है फॉर अ पर्सन if they want to sell a property, deal with assets or something else, or they if there is a grant of probate, ठीक है, हम्म जहाँ पे एक बंदे की डेथ हो गई या कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है. हम्म It is important to understand that capacity is not something which a person has or has not for all purposes. Whether or not someone has capacity is a question to be asked in relation to a particular decision. ठीक है? For example, someone with a brain injury might have the capacity to decide whether they prefer to live, but not have the capacity to manage or invest a large sum of money to provide for future हम्म expenses. यानी कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैपेसिटी यहाँ पे एक वैलिड बात है कि नहीं. ठीक है, हम्म आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक बंदा आई मीन एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट पर है और उसको आप कहें कि जी आप ये इन्वेस्टमेंट और इस चीज़ों के बारे में वो कर लें. नो, बट इफ ए पर्सन इज बेड रिडन एंड ही गिव्स एन अथॉरिटी या वो एक वो उस पे आता है वो आई मीन इफ देर इज यानी कि उसका सब्जेक्ट जो है या उसकी जो कंडीशन है इट अलाउज हिम टू मेक दैट डिसीजन. ठीक है, सो देन इट वुड बी प्रिज्यूम दैट ही हैज कैपेसिटी. हम्म Under section 3 subsection 1, the impairment is described in terms of being unable to understand the relevant information, retain the relevant information, use the relevant information, and or communicate a decision. ठीक है. According to section 3.4, the relevant information relates to reasonably foreseeable consequences of deciding one way or the other or failing to make a decision. The Act also gives the Court of Correction the power to make declarations as to the person's capacity and ability to contract in specified situations. Section 15. The statutory definition of a capacity set out above is expressed in the Act to be for the purpose of the Act only, but it is in practical terms very similar and the same as the approach to be taken when determining capacity for the purposes of contractual law issues. The effect of entering into a contract with a person lacking capacity. Under Section 7, a person without capacity still remains liable to pay a reasonable price for necessaries. These are defined as goods or services suitable for a person's condition of life and to his actual requirement at the time when the goods and services were supplied. Section 7, subsection 2. In other cases of incapacity, the position is that the contract is binding unless the person claiming incapacity can establish first that they did not understand what were doing, and secondly that the other party knew that to be the case. Imperial Loan Co versus Stone 1892 का केस है. It can if this can be established, the contract will be voidable. ठीक है, it will be voidable, not void. The court will decide कि voidable है कि नहीं, but उसकी conditions है. ठीक है. Similar rules apply to contracts entered into by a drunk person. The individual becomes so intoxicated that they do not understand what they are doing will have to pay a reasonable price for necessities, but will not be bound by any other contract they make. Matthews versus Baxter, 1873. This position should logically extend to those incapacitated by other intoxicating substances. ठीक है. So laws relating to incapacity या capacity of a person, whether हम्म intoxicated or whether lacking mental capacity, या a physical impairment जो कि उनको वो capacity से रोकता है, such as एक बंदा I mean body उसकी body impaired है and हम्म they cannot sign any document, या they cannot give a decision to sign a document. ठीक है, they cannot see or they cannot speak. ठीक है, हम्म you cannot until reasonable steps are taken and until आपने बेस्ट endeavors ना अप्लाई की हो, यू कैन नॉट आर्ग्यू एंड से कि जी ये जो है आई मीन दिस इज द सिचुएशन कि ये इट इज बाइंडिंग.
It will not be हम्म binding. हम्म Circumstances देखे जाएंगे, but again, this is for the court to decide, and it is circumstantial, heavily circumstantial. ठीक है? At times court decide करेंगे कि the contract is binding if it is in favor or if it is with regards to necessities. ठीक है? And at times court decide करेंगी कि नहीं, because they lack capacity, whether they're intoxicated or whether they do not हम्म have the mental or the necessary capacity to enter into that contract. हम्म, ठीक है? So that is all जो कि हमारे पास है for intention and capacity. ठीक है. Today we have covered two things: intention and capacity and promissory estoppel. Yes. टाइम भी खत्म हो रहा है. चलो मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को खत्म कर लेता हूँ. चलो.